In this video, I will explain you HTML attributes. What is HTML attributes? HTML attributes are special words used inside HTML tags to give extra information about an element. Basically जो HTML attributes होते हैं वो tags को extra information देने के लिए use किए जाते हैं. HTML attributes provide additional information about HTML elements. All HTML elements can have attributes. जितने भी HTML के elements होते हैं उनके attributes हो सकते हैं. Attributes provide additional information about elements. It means जो attributes होते हैं वो additional information provide करते हैं elements को के बारे में. Attributes are always specified in the start tag. I will show you. You can see here it's an image tag, and inside the image tag you can see here source is an attribute and lt is a attribute. तो जो भी attributes होते हैं वो हमेशा start tag के अंदर ही होते हैं, end tag के अंदर कभी नहीं होंगे. Attributes usually come in name value pairs, like you can see here name is equal to value. Source and lt, they both are the image attributes. Source tells the image location. जो source attribute होता है वो image की location बताता है, and lt alternative text for the image. lt helps if image fails. In case अगर आपका network issue है या path वगैरह wrong है तो at that time lt helps you. Next is href attribute. It's an anchor tag attributes. The anchor tag a tag defines a hyperlink. The href attributes specifies the URL of the page the link goes to. href आपको जो भी लोकेशन है, जो भी पेज आप शो करना चाहते हो उसका URL बताता है. The image tag should also contain the width and height attributes. Image tag के अंदर width and height attributes you can add. They both are the image attributes. अगर आपको आपकी image की height and width set करना है, so you can use width and height attributes. Width and height attributes which specifies the width and height of the image in pixels. Next is style attribute is used to add style to an element such as color, font size and more. Style attribute basically we are using अगर आपको कुछ color, font size वगैरह ऐड करना है आपके कंटेंट का या स्टाइलिंग वगैरह करना है हेडिंग पैराग्राफ वगैरह को तो यू कैन यूज स्टाइल एट्रीब्यूट.